Good evening, Adab, Salam, Namaskar. Once again, welcome to PLG weekly meet. This is 158th meet, and this meet is Children Special. I'm here with you, Tufail Ahmed, Global President of Poetry and Literary Group, and I have here with us many of our executive members, notably Executive Chancellor Sharad Jhaji is here from UK. He is connected with us. And we have young poets from all around the world. Children, especially in the early years, are like little sponges, absorbing all the information around them and then actively making a sense of it. Hunter said, and I have just quoted. Children, reading poetry helps them to learn about voice, pitch, volume, inflection, and most important, presentation. While these are the main functions of expression, they are also incredibly important for children learning to read, write, and express themselves. Poetry can teach young readers about speech patterns, which can give them cues to the world on and improve their expression, and which not only helps them in literature, it helps them in all aspects of life. And take it any subject, whether you write physics or biology or economics, unless you are able to express yourself what you know, you can't succeed in any field. As it is said, that if you know something, but you don't know how to express, it means you don't know anything. And literature and poetry give exactly that to you. It empowers you with the power of expression. And you are able to tell or write what you think and what you know. And that's very important in your life, not only in literature, but in any field. The basic aim of Poetry and Literary Group is to connect people with literature. And ladies and gentlemen, children, if you don't connect children to poetry, I don't think we will be successful in our mission. And with that in mind, we hold every quarter a children special poetry, wherein children recite their self-composed poetry. And today, I'm really pleased to see very young boys and girls, and to the teenagers, everybody over here, ready to recite and express themselves. So without taking any further time, I will take you to the anchor of the day, and who is none other than
Srivani. She is 11th grade student, now 12th. She has interest in dance, singing, drawing, cooking, and of course, poetry. She is very active in school activities, and of course, she has been a face of children voice on PLG platform. She has won many laurels and she has got many prizes for her achievements. So, boys and girls, please welcome Srivani with a big hand. Over to you, Srivani. Thank you so much, Sufel sir, and good afternoon, everyone. Welcome to PLG 158 Children's Kavi Sammelan Mushaira. आज हम सब इकट्ठे हुए हैं शब्दों की ताकत और कविता की सुंदरता का जश्न मनाने के लिए। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि आज हमारे साथ दुनिया के हर कोने से पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। हम हर एक पोएट का स्वागत करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप सबकी रचनाएं हम सभी को प्रेरित करेंगे। So, whether you're here to read your own poetry or to listen to the poems of others, we hope that you will leave this event feeling inspired. Once again, I would like to welcome all children to this special poetry meet. आप सबका स्वागत है, and I wish you all the best of luck. Let's get ready for an evening filled with lots of creativity, lots of inspiration, and lots of fun with some amazing kids. So, as your first entry, I would like to introduce you to Charvi Sharma. Charvi is 16 years old and she has already accomplished so much. She is a rank holder in her class 10 with an impressive score of 98.76%. In addition to her academic achievements, Charvi is also a talented artist. She writes poetry and songs and also sings and shares her music on YouTube and Instagram. I am intrigued. And she aspires to become a neurobehavioral scholar, that is, studying the connection between the brain and behavior. Even more intriguing. Welcome, Chavi. Thank you for introducing me. I will be reciting 2 poems today that I've written. The first one is titled Lost Endeavor. So here it goes. I saw you at my funeral the other day, a statue amongst a hoax of gloomy figures. You held a box of things you didn't say, edges overflowing with torn pictures. A thrust of gale was all it took for the pieces to blow away. The ground beneath you shook. You could no longer let them stay. 11 years of half-truths escaped your chained lips. A long-lost wasted youth made you lose your grip. You spoke like never before, dreamt words out loud and clear. You were everything and more. I loved only you, my dear. If only could you have said, I wouldn't have left forever, and you needn't be seeing me dead as your hardly lost endeavor. My second poem is titled Our Love. This is something that I wrote when I was inspired by the relationship I saw, like a relationship between 2 of my close friends. And I tried to capture the essence of their love. So, Our Love, here it goes. If I were a poet, I would have written to you all the beautiful words and lines you deserve to be known through. Dear mine, I am afraid I'm not the best with rhymes, and in this moment, I'm only able to describe our love. Our love is as warm as all colors of the sky when the sun and moon kiss through day and night. Our love is as fresh as the blanket of snow that takes the night to settle on your window. Our love is as thrilling as the fight between wild lightning and stubborn rain. Our love is as considerate as the silence of understanding that comes with unsaid pain.
Our love is as sweet as the secret smiles that are shared between four wanting eyes. Our love is as timeless as the feeling of eternity felt in just 12 minutes of a hug. Our love is as unpredictable as it could get on a mundane date like the 30th. Our love is as unexpected as the rainbow that becomes seen in a month like October. Our love is as simple as a stomach full of butterflies. And I love you too, replied. Our love is everything that my fluttering heart will ever want, everything my soul will ever need to be complete. Thank you. That was a really beautiful two poems that we really heard. Beautiful, beautiful, very nice. Mhm. And so now I would like to call upon Hamza. Hamza Rizvi. Hamza is an AS level student from Bahrain who possesses a diverse range of interests and talents. Now he enjoys playing volleyball, basketball, and football. Despite his many talents and accomplishments, Hamza's great strength is his ability to form connections with those around him. Hamza is also an inspiring poet. So Hamza, welcome. The stage is yours. Thank you for the introduction. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. My name is Hamza, and today I'm going to be reciting a poem that I wrote about tigers. It was my first ever poem, and I wrote it during a class. So this was my first ever poem, and I'm going to recite it for you all. Tigers are beautiful creatures. They have some amazing features, like their stripes and strength, and their big size and length. They have big paws and mighty jaws. We are destroying their habitat because of our mindless act. They are endangered and close to death. Any second might be their final breath. So let us try to help them instead, or soon they will all be dead. Thank you. Very nice, very nice. A good That message was also, Hamza. that was really thoughtful and inspiring, honestly. So Thank you. now, ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce you to Hitakshi, a talented and bright young girl from Oman. She has a passion for poetry and she loves to express herself through words. She has a natural talent for writing. So please give a warm welcome to Hitakshi as she shares a wonderful poem for us today. Welcome. Hello everyone, my name is Hitakshi and I am from Muscat, Oman. The poem I am going to recite is about a young boy who is a refugee. He goes through a journey where he loses many of his belongings and his family members. He ends up in England, where he goes to a new school, and when he gains the confidence to tell his friends about his story, he tells it off. There are 6 main parts, and I will be reciting about the third part. It is when he goes through mountains. He has to climb above mountains and everything that might be in front of him. With him, he takes a backpack, which is his last memory of his country. So if that backpack could say anything to encourage him, I believe this is what he would say. Oh, my faithful carrier, I hope I can help, holding the only things you have left. Can you hear the singing birds, the river rushing, the sound of summer? Oh, my faithful carrier, I hope I can help, trying to ease your journey. Can you feel that the wind's cool breeze, the warmth of sunrise, the fresh air in your lungs? Oh, my faithful carrier, I hope I can help, holding everything vital. Thank you. That was really beautiful. I can't even lie. You're a really talented young girl. Very beautiful. Yes. Now we must hear from a talented young poet named Narun. Narun has a passion for cars and for reading books. He is also an accomplished badminton and chess player.
This is Narun's first time reciting his poetry. Now, it takes courage to step out of one's comfort zone and to share their creative work with others. So I commend Narun for taking this step. I have no doubt that his poetry will captivate us today. Welcome, Narun. Thank you. Hello everyone, my name is Narun. I'm 10 years old and I'm studying 5th. Today's topic of mine is about saving nature. Nature's view of greenery, mind's view of scenery. Trees around us, happiness surrounds us. Cut down trees, no one cares. Tables and shelves, cupboards and cots. Cut down trees, no one cares. Furniture or future, oxygen or pollution, rain or dry, should we care? Time to wake up, time to care. Our future lies on trees. More forests, less furniture, saying no to cutting trees. Plant more to betterment. Be wise and embrace trees. Save trees and save earth. Thank you. Wow. I am Very so proud nice of thought, you. very nice thought. Furniture, future, wonderful message you got there. Keep up the writing. Now, so far we've been hearing from some really talented young poets. One such poet is Anshi Singh, who is just 11 years old. Anshi एक talented लड़की है जो नृत्य करना पसंद करती है, especially कथक. अंशी क्लासिकल डांस कथक में खास रुचि रखती है. उसके अलावा अंशी को अपने आसपास की चीजों के बारे में छोटी छोटी कविताएं लिखने में भी मजा आता है. इसके अलावा अंशी एक स्पोर्टी लड़की भी है. उसे अपने दोस्तों के साथ स्केटिंग और दौड़ना पसंद है. These activities उसे स्वस्थ रहने में मदद करते हैं. It is clear that Anshi is a young girl with a lot of energy and enthusiasm. So we are excited to hear Anshi's poetry today. Welcome. Thank you. Thank you, Didi, for my intro. Good evening, everyone. First of all, thank you, PLG, for letting me present my poem. Recently, I finished 5th grade, and one of the most hardest topic ever taught to me were angles. So I've tried to portray my this suffering into words. So enjoy. God, what are all these angles that I spot on the bedroom floor or the ones close by the door? I go through a challenging war whenever I open my maths textbook. Oh, geometry annoys me to the core. Vertex, arms, rays, and what more? My mother has misunderstood these shapes to be a lovely score. But these things make my eyeballs sore. I want to ignore all these crazy lures, just how I ignore my father's snores. But there's someone who loves to explore angles. You know who? My maths teacher or my father's too. I need to get my armor to fight off my teachers and other lobe. Please order this amazing nonsense poem with some nice claps and show some fight and might against these lines and triangles. Thank you. Wow. That was an interesting, fun-filled take. Very on nice, very beautiful. Angles and geometry, yes. Because personally, I've always loved maths and geometry, to be precise. Good work. So next up, I would like to welcome Aryan Kumar Singh to our poetry event today. Aryan, third standard का एक talented लड़का है जिसने अपनी कविताओं का प्रदर्शन PLG में पहली बार किया है. But that's not all. पहले भी किया है, sorry. But that's not all. Aryan ने international kids poetry में भी भाग लिया है. Guess what? He has won prizes for both patriotic speech and poetry. I am so proud of his achievement. So excited to see what he has in store for us today. Thank you. नमस्कार बंधुओं, मैं जमशेदपुर से आर्यन आप सबको पढ़ना क्या हो गया? ठीक है आवाज आ रही है.
आप बोलो। नमस्कार बंधुओं, मैं जमशेदपुर से आर्यन आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आओ मिलकर आगे आए। आओ मिलकर आगे आए, अपनों को प्यार से अपनाए। चाचा हो या दादी नानी, सबके आशीर्वाद पात्र बन जाए। मीठी वाणी को अपनाकर सबके लाडले बन जाए। अच्छी आदतों को अपनाकर अपने व्यवहार में सुधार लाए। आओ मिलकर आगे आए। शिक्षक हमें जो देते शिक्षक, उस शिक्षा के पथ पर चलकर हम अपनी पहचान बनाए। आओ मिलकर आगे आए। फैला है जो घनघोर अंधेरा, बंदी बक रोशनी फैलाए। तोड़ की सारी जाति बंधन, हर रिश्ते में प्रेम बनाए। तोड़ की सारी तकरारों को एकता का संदेश फैलाए। आओ मिलकर आगे आए। गिरकर उठना फिर गिरना ही है संघर्ष की पहचान। उस संघर्ष की राह पर चलकर हम अपनी पहचान बनाए। आओ मिलकर आगे आए। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, वेरी नाइस। तो आगे Thank तो आगे लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम अहाना। तो अहाना एक प्यारी सी लड़की है जो वास्तव में थोड़ी सी शर्मीली है। वह एक सच्ची परफेक्शनिस्ट है जो भी करती है उसमें सबसे अच्छा बनने का प्रयास करती है। अहाना किताबों की शौकीन भी है। अपनी शाइनेस के बावजूद अहाना की कविताएं उसके जीवन के बारे में हमें कुछ कुछ कह जाती हैं। So without further ado, let us welcome Ahana. Hi, good evening, good day, everyone. Today, I, Ahana Tripathi, will be presenting to you my work, The Palace on Pastel Clouds. It is a poem about a fictional place where everything is a shade of pink. It has a playful and vibrant tone and is written using an imaginative writing style. I really hope you enjoy it. The Palace on Pastel Clouds. In an otherworldly place, perched atop the sky, palace of pastel pinks, upon the rosy clouds lies. Its walls, the blush of newborn's cheeks, its doors, a shade of peachy pink. The windows laced with lotus hues, and the curtains in angel's wings. Resides within the lady petal, called so, for she was birthed from one, and gentle and genial as a petal she is, and just as gracefully gorgeous as one. Her robes are pearl and her shoes the color of foam, her hair and eyes a bubblegum tinge. Her voice is like the ripening of cherry blossoms, her mien the sunset's pale fringe. There she spends her days, in the coral and cream hall, and wandering about the royal garden, with its poppies and pansies and all. There, in that other world, the birds are dyed a fairy tale pink. The animals dip in pools of magenta to make their fur a pinkish tint. If you so wish, you may join the fantasy of this pastel land, but grab a pink coat beforehand, for the queen never welcomes a guest who's blind. Thank you. Wow, that was really beautiful. So, अब मैं आपको इंडिया से ही एक लड़की रिया से मिलाना चाहती हूँ। वे अपनी लेखनी कौशल का प्रदर्शन करके पीएलजी का दिल जीतने आई हैं। पीएलजी के मंच पर रिया का हार्दिक स्वागत है। रिया, वो अनम्यूट करना होगा शायद। is Riya there in the meet? She might be on Gauri Raghu because she was speaking, but then I think she's trying to think how to unmute. If you could direct her, I don't know whether she's on the laptop or phone. Gauri Raghu, you can just raise your hand and tell whether you are Riya or not. Sorry, sir, I'm not.
And I Okay. can unmute. I'm so sorry. Would you like to recite later or? Oh, well, if it's all right, I can recite right now. Oh, sure, go ahead. Okay. So my poem is called Leprechaun's Gold. It was written by me, I think, in 2022. So I wrote it to basically create awareness about the depletion of our forests. So the condition of our forests, it's pretty much immaculate on the outside, but to bring it back to what it was, say, about 500 million years ago, impossible. So my poem, Leprechaun's Gold, it's rather short, I'm afraid, but here goes nothing. So, Leprechaun's Gold. The aura of mystery still remains in my mind as to what I shall explore and find in the very green depths of our everlasting furniture, forests, the wondrous wild creatures that they inhabit, from dancers, prancers like rabbits. A world of four-leafed clovers and dryads it is, who get axed down by mortals. Each creature glorifies its presence with its own unique beauty, just like each leprechaun has his own crock of gold. O humans, learn to protect thy pot of treasure. From autumn winds to monsoon rains, I wish you stand steady and bold. Like immortals above the sky, let the seeds below the ground have the power not to mold. Rise and shine like stars on a starry night. With all your might, you withhold wisdom and to last throughout till the end. You have a right. You, from the start, you were the one who cared for all living, with wonders inlaid within, sparkle bright. I'll try my best to see you're not cleared, and I pray you can be by our side, by the grace of Merlin's beard. Thank you. That was a really beautiful poem. I can't. Very nice. Very well told. Thank you. Thank you. Yes. So next up, we'll be hearing from Anusha. Anusha is a 9th grade student studying in Pune. वो एक फुर्तीली लड़की है जिसे नई चीजें सीखना पसंद है. वो नाचती है, साइकिलिंग भी करती है, किताबों में भी उसकी रुचि है और इंटरनेट पे कॉमिक्स पढ़ना, उसके साथ हंसना भी उसे बहुत पसंद है. But most of all, Anusha is dedicated to having fun and making the best out of her life. Such an inspiration. Let's give a warm welcome to Anusha Singh and show our support for this young, talented poet. Thank you, Didi, for my introduction. A very good evening to one and all present here. My name is Anusha Singh, and today I'll be presenting a poem written by me titled Acceptance. Before beginning the poem, I would like to give a brief context as to the circumstances in which the poem was written. Recently, I have been to the highly awaited class of grade 10. Now, as all of you can imagine, going to grade 10 is a transition on its own. It's a change that can overwhelm one, like all changes, good or bad, do. When I went to 10, there were many eventful things that happened and that had an impact on me. And while now, 1 month later, it feels everything is fine, in the heat of the moment, I couldn't help but feel overwhelmed. This is the feeling that I try to portray in my poem and also foreshadow to how I can get out of it. So, without further ado, here is my poem titled Acceptance. Recently, as I completed a glorious decade and a half, there were some abrupt changes that were hard to get over with just a laugh. Changes not as drowsy as the transition from the vibrant morning to the laid-back afternoon, but more like an earthquake caused due to a volcano that led to a tsunami and then a typhoon. Estranged friends and strange feelings, all my sense of security stolen away from me. No more in my own body and my little bubble did I now feel free. Now, how do you deal with this mess, you may ask?
with good humor, an iron skin, perhaps a mask. But what matters in the end, you may say, is that you came to terms with the forces at play. You swallowed the bitter acceptance, the smile, and marched ahead with the will to try. Alas, my friends, my grief had rendered me blind, and instead of choosing the path that was right, the time tested medicine of a smile and resilience, I used a pill called half cooked denial, along with a side of breakdowns and rebellions. It numbed the pain, helped me feel everything was fine and cool, only to cry every time I came home from school. And let me warn you, all hell breaks loose as the ghosts, ghouls, and spirits that reside in my mind scare away everyone I hold dear and try to consume my light. So now, the only choice if I want to survive is to go on a lone mission with me, myself, and I to finally get the elixir of bitter acceptance, hopefully, along with some peace of mind and perhaps a jar of happiness. Thank you. Very nice, very well presented. Thank you. Thank you, sir. Yes, that was a beautiful poem indeed. Very thought-provoking, appealing to the emotions, Anusha. So glad we could hear from you. Now I have the pleasure of calling upon a young poet, Anika. Anika is just 9 years old and she has a great passion for outdoor activities such as hiking, snorkeling, and photography. In addition to her love for the outdoors, Anika is an avid reader who enjoys immersing herself in stories of all kinds. She also has a deep appreciation for music and she loves listening to different genres. So today she will be sharing a poetry with us and I am excited to hear about her unique perspective on the world. So let's give a warm welcome to Anika and show our support for this young and talented poet. I don't know whether she is there or the name doesn't appear. So I don't know whether she's there or not. Anika, are you there? That's fine. So let's move on to Vidushi. We have the pleasure of hearing from a very talented young poet, Vidushi. She is 15 years old and she is currently studying in the 9th class. She is an active participant in arts activities at a school, and her love for art extends beyond just the visual arts. Now, Vidushi is a talented singer, and she enjoys singing mantras. Vidushi also enjoys playing games, and I'm pretty sure she must be quite good at them. So today, I am excited to hear Vidushi's poetry and experience the world through her unique lens. Welcome, Vidushi. My name is Vidushi. I am 15 years old, like she said. And my poet's name is Ulta Sansar, and it's in Hindi. Ulta Sansar, सोच के देखो, अगर ऐसा हो जाए, आँख एकदम गीली और ठंडी हो, समुद्र सूखा और गर्म हो जाए, पत्थर ऊपर आसमान में उड़ते फिरे, गुब्बारा नीचे जमीन पर पसर जाए, घास नीली नीली और अंबर हरे रंग में रंग जाए, सूरज चकोर और चंद्रमा लंबा हो जाए, तारे चमके दिन में और रात में दिन हो जाए, जानवर खुले घूमे और इंसान पिंजरे में जाए, बिल्ली भो भो करे और कुत्ता म्याऊ म्याऊ चिल्लाए, हफ्ते में सिर्फ एक दिन मंडे, बाकी दिन संडे हो जाए, दादी मनाए अपना 8वां जन्मदिन और मैं 80 की हो जाऊं, सीधा सीधा सब बेकार, उल्टा संसार ज्यादा मजेदार, मुझको प्यारा मेरा उल्टा संसार. Thank you so much. Thank you so much. Very well recited. Thank you. Indeed, that was very well written, very well versed. And अब मैं आपको भारत से ही
आई एक 16 साल की लड़की प्राची कुमारी के बारे में बताने जा रही हूँ। प्राची मैथिली, हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषाएं बोलना जानती है। I'm pretty sure उन्होंने अपनी अद्भुत लेखनी कौशल के साथ लोकप्रियता पाई है और अब वह अपने लिखी कुछ कविताओं के साथ अपनी पहचान पीएलजी में भी बनाएगी। तो आइए, वेलकम प्राची। Good evening, everyone. My name is Prachi Jha. I am 16 years old. I am from Madhubani, Bihar, and I am in class 11th. Thank you. So, मेरा टॉपिक नारी आत्मसम्मान है। हिंदी में मैं कविता सुनाने वाली हूँ। प्रेम नहीं प्रहार चुनूंगी, प्रेम नहीं प्रहार चुनूंगी, तिरस्कार नहीं आत्मसम्मान चुनूंगी, तिरस्कार नहीं आत्मसम्मान चुनूंगी। मैं बन तुलसी तेरे आंगन की, मैं बन तुलसी तेरे आंगन की, पवित्र तेरा संसार करूंगी। मैं जग तेरा भी सम्मान करूंगी, मैं जग तेरा भी सम्मान करूंगी। गर बात मेरे आत्मसम्मान पर आई, सच कहती है आज की नारी, सच कहती है आज की नारी, मैं प्रेम नहीं प्रहार चुनूंगी। है ममता की मूरत मुझ में, है ममता की मूरत मुझ में, और दहकती ज्वाला अंतर मन में। अगर चीर हरण हुआ द्रौपदी सा, ना मुरलीधर को मैं याद करूंगी, ना मुरलीधर को मैं याद करूंगी। मैं खुद काली बन नित मानुष तेरा अपसंहार करूंगी। अगर बात मेरे आत्मसम्मान पर आई, मैं प्रेम नहीं प्रहार चुनूंगी, मैं प्रेम नहीं प्रहार चुनूंगी। थैंक यू। वाह, वाह, बहुत सुंदर। Very nice. Very well written poem. Thank you. Thank you so much. प्राची यानी सुबह होता है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम विद पीएलजी। सुबह और सवेरे की तरह नई रोशनी, नया थीम, नई कविताओं के साथ आप आई हैं। ऐसे ही आते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद पीएलजी। So next up, I would like to call Afan. Afan is 13 years old, currently in Oman. He is an enthusiastic student who loves art and reading. He enjoys playing badminton and football. In fact, Afan has even participated in many inter-school tournaments, and he has received several awards and trophies for his performance. So today, we are excited to hear Afan's poetry and experience the world through his unique perspective. His passion for art, for reading, and sports is sure to be reflected in his words, and I really look forward to being inspired by his creativity. Welcome, Afan. Is Afan present with us? Doesn't look like. Maybe we can call नहीं, him आप later. दूसरे पार्टिसिपेंट्स को ले लीजिए। That's fine. So moving on to our next participant, ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce Fatima Hassan, a young poet. Now, Fatima एक 11 साल की लड़की है जो पुणे में रहती है। फातिमा न केवल एक अच्छी छात्रा है, बल्कि एक फुटबॉल की खिलाड़ी भी है। उन्होंने स्टेट लेवल पर खेला है और जल्द ही वो नेशनल लेवल पर भी खेलेगी। सो बेस्ट ऑफ लक विद दैट फातिमा। लेकिन खेल कूद के अलावा फातिमा रोज कुरान पढ़ती है। अपने दादाजी से प्रेरित होकर फातिमा एक आर्किटेक्ट भी बनना चाहती है। उनको अपने फ्री टाइम में संगीत सुनना बहुत पसंद है, खासकर अंग्रेजी गाने, लेकिन अरबी जैसी अन्य भाषाओं के गाने सुनना भी वो पसंद करती है। So please join me in giving a warm welcome to Fatima Hassan
as she takes the stage to share her love of poetry. Fatima? So, I suppose Fatima is also not present with us in the moment, and that's fine. I would like to take any poets that could not connect before, if they're like here right now. किसी को opportunity नहीं मिला. You can come yourself forward, raise your hand, and recite your poem. The one who has not. Thank you. Absolutely, yes. Yes, Shivani. So I guess I'd like to welcome myself on the stage. I'm here with a short and sweet poem I'd written in class one day. I mean, what else does one do in math class, right? So they see you smile, you've got your glow, but they can't really see what's down below. You'll probably laugh, that happy face you make, but you can't always hide your inner space. She'll judge you quick. She thinks she knows, but she doesn't know of your depths below, your thoughts and feelings. You're quiet and you're true, and you're so much more than just that cheery cue. So I tell my girl, don't assume, don't judge too fast. His smile does hide his troubled past. He's more than just his outward charms. He's complex. He's deep. He's holding depths unharmed. She asked me how I would know of these depths beneath your outward glow. And I tell her it's because I've been there too, misunderstood for being untrue. Because, see, we all hold layers for light and for dark, and sometimes we're misunderstood by remark. But I could see past my brother's happy face, and I know there's more to his in his face. So don't let their judgment weigh you down. Your true self will always be profound. It's okay to be vulnerable. Just be yourself. You shine bright and let your spirit take its flight. Thank you. Very nice, Shivani. And would you call Vivaji for this magazine? Very beautifully recited. Thank you, Shivani, and very, very good anchoring. Very smart. Thank you very much. This is actually the first time I wrote a poem wherein I tried to rhyme, because usually I write free verse poems and things like that. So this is really out of my comfort zone. I wanted to present it. Very nice, wonderful, excellent project. Thank you very much, Professor. So now we will be having the presentation of our weekly magazine for PLG. Namaskar. हाँ जी, आवाज सुनाई दे रहा है. नमस्कार. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद
ये अवसर प्रदान करने के लिए शिवानी को। और ये क्या कर रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। आप सबका उत्साहवर्धन है कि ये यहाँ पर इतनी देर तक टिकी हुई हैं। और तो अब आज का मैगजीन हम देखते हैं। ये मैगजीन बहुत ही विशेष है और हम इसको आज पीडीएफ के फॉर्म में देख रहे हैं, पीडीएफ फाइल के फॉर्म में। थोड़ा सा बड़ा फाइल है आज, बहुत सारी कविताएं हैं और यह खूबसूरत चित्र जो है हमारी कला प्रभारी शालिनी जी ने बनाकर भेजा है। तो बहुत सुंदर। शालिनी जी ने ये पेंटिंग बनाई है और मोर, पिछले बार का जैसे हमने कलर थीम भी नीला रखा था, और ये जो मोर है वो भी नीला है। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, ऐसा कुछ लग रहा है इस मोर को देखकर। नीले रंग में नीले रंग का इतना खूबसूरत समायोजन ये सिर्फ शालिनी जी ही, डॉक्टर शालिनी ही कर सकती हैं। और ये रंग बिखेरता हुआ मोर जो है, पंखों को फैलाया हुआ मोर, अ, इस बात का इस बात की सूचना देता है कि हमारे पीएलजी भी ऐसे ही आकाश पे, नभ मंडल पे अपनी कविताओं के माध्यम से बिखर रहा है, फैल रहा है वाईफाई के माध्यम से। इसको किसी माध्यम की माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे भावनाएं बिखरती हैं वैसे ही ये आकाश पे फैला हुआ मोर का पंख है, और वैसे ही हमारे पीएलजी के कवियों की प्रतिभा, उनके भाव, उनका काव्य बिखरता जा रहा है और लोकप्रियता के शिखरों को छू रहा है। और इसके बाद हमारी खूबसूरत और हमारी एलिगेंट कवियत्री डॉक्टर शालिनी गुप्ता जी की खूबसूरत सी तस्वीर है, आकाश की तरफ देखते हुए, विस्तृत आकाश को देखते हुए शायद। और बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट अनुपम जी के द्वारा, अनुपम रमेश किंगर जी के द्वारा। इस रिपोर्ट में बहुत ही खूबसूरती से पीएलजी के 3 साल के यात्रा को बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। और हमारे सारे प्रतिनिधि कवि जो 5 जोन से पिछली बार जुड़े थे और जो हमारे रीजनल जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी कविताएं, हर हर बिंदु को यहाँ पे छुआ गया है और हर बिंदु की यहाँ पे व्याख्या की गई है। और उसके बाद इसको हमारे, जिन्हें हम प्यार से गुरुदेव, आदर से क्षमा कीजिएगा, गुरुदेव कहते हैं, कपिल बत्रा सर ने इसे फिर से सत्यापित किया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक रिपोर्ट बना है, ऐतिहासिक। और हमारी खूबसूरत अनुपम रमेश किंगर जी एंकर ऑफ द डे भी थी, उनकी तस्वीर। और इसके बाद हमारा इंडेक्स है जिसमें हमारे प्रतिभागी कवियों की सूची है। और हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट जो अक्सर अपनी कविताएं शेयर करना भूल जाते हैं, उन्होंने इस बार कविता शेयर की है और वो उर्दू में है। और उसके बाद हमारी संचालन निदेशक सिमी कुमारी जी की कविता है। थीम त्रिवेणी था, तो त्रिवेणी से मिलती जुलती कविताएं सबने लिखी गई हैं। और फिर हमारे ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट सतीश सेठी जी की कविता है, हमारे वरिष्ठ कवि विपिन पांड्या सर, और उसके बाद हमारे मीडिया प्रभारी अनुपम पाठक सर, और सारे प्रतिभागी कवियों की कविताएं, कुछ भावनाएं, कुछ ने कविताओं के साथ छोटी छोटी टिप्पणियां भी लिख कर दी हैं। वो सारी चीजें इस पत्रिका में समाहित करने की मैंने पूरी कोशिश की है। और आखिरी पन्ने पर हमारे आगामी कार्यक्रमों की सूची, और उसके बाद हमारे प्रतिभागी कवियों की सूची। बहुत संख्या ज्यादा थी, बहुत ज्यादा तो नहीं थी, हमने गागर में सागर भरने की कोशिश की अनुपम जी के माध्यम से। ये काम सिर्फ अनुपम जी कर सकती थी, न सिर्फ मंच संचालन बल्कि पूरे कार्यक्रम का संचालन और रूपरेखा अनुपम किंगर जी ने तैयार किया था, और सिर्फ वही ये कर सकती थी। नियत निश्चित समय में हमारा कार्यक्रम भी समाप्त हुआ। तो इस बार, पिछली बार हमने 2 बैनर तैयार किए थे, और ये दोनों बैनर इस बात का सूचक है कि हमारे कवि हर जोन से, हर भाषा और विभिन्न भावों के साथ पीएलजी से जुड़ने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, और एक बार फिर से पीएलजी के 3रे वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के कार्यक्रम के लिए वापस हमारी मंच संचालिका के पास चलते हैं।
क्या बोलूं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विभा जी ने प्रस्तुति विभा जी। बहुत सुंदर विभा जी की प्रस्तुति रही। हमेशा बिल्कुल। की तरह बहुत अच्छा बोला आपने और हम्म। अच्छे से समझाया। Um, तो इसी के साथ we are nearing the end of today's meet, but there were a couple poets that were not present when we called their names. Is anyone present here? आपको अगर नाम याद हो तो एक बार। मैम मैं पोएट्री बोलने में एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज थी। जी, आप हैं? हाँ जी। अपना नाम बोल दीजिए एक बार थोड़ा हल्का सा। प्रिया पारपियानी। अच्छा, वेरी गुड। जी। वी वर वेटिंग फॉर योर पोएट्री। Yes. So, I would like to give me a second. हमारे साथ रिया पारपियानी जी फिर से जुड़ गई हैं। I am so glad that we can hear from you. तो अब मैं आपको रिया जी से मिलाना चाहती हूँ। वो अपनी लेखनी कौशल का प्रदर्शन करके पीएलजी का दिल जीतने आई हैं। तो पीएलजी के मंच पर रिया पारपियानी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। आज मैं एक लड़की की आप बीती सुनाना चाहती हूँ। मतलब उनके अंदर के भाव से आपका मिलन करवाना चाहती हूँ। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। बैठी हूं मैं शांति से, पर दुनिया की हर जंग जीत जाऊंगी क्रांति से। आत्मविश्वास से भरी हूं मैं, तभी तो दुनिया के सामने डटकर खड़ी हूं मैं। मानती हूँ शांत लोगों का जमाना नहीं, पर मुश्किल के समय बहाना नहीं। दुनिया के 1 मिनट। It's fine, you can take your time. Just give me a second, please. Sure, you can take your time. Meanwhile, I do not see those participants that There is one boy written Amrit Pal. Is he one of the participants? Because I don't think so. क्या किसी और के नाम से उन्होंने ज्वाइन किया? हो सकता है क्लियर। अमृत पाल जी, पाल अमृत। So I don't think we'll be hearing from any more poets for the evening, which is fine. But I was very excited to hear from all of the poets, but we couldn't hear from some of the wonderful, talented young poets that were supposed to be here. That's fine. Right now, we're waiting for Riyaji to tune back in with us. But till then, very nicely spoken, and all of them who have been waiting, Anusha ji, Prachi ji, everyone, thank you to all of them. At the end, after Riya speaks, Simi ji will also be speaking, giving a thank you note.
Thank you very much, sir. I think we can continue with the thank you note, and after that, if she comes, maybe network problem is there. We can. Yeah, correct. नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ जी। जी, फरिश्ते भी उनके साथ खेलने आते हैं, फरिश्ते भी उनके साथ खेलने आते हैं, खेलते खेलते वो भी बच्चे बन जाते हैं, उनकी मासूमियत के किस्से परियां सुनाती हैं। ऐसे हैं वो बच्चे होनहार जो खुद की कविता लिखते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत रहा, नन्हे मुन्ने बच्चों का। बोलते हैं ना, होनहार विद्वान के होठ सीखने पार। बहुत ही सुंदर, इस उम्र में इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं लिख रहे हैं, तो बड़े होकर पता नहीं हम लोगों को तो मात ही दे देंगे। इतना खूबसूरत आप लोगों ने बोला, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। और हमारी जो श्रीवाणी है मंच संचालिका, उन्होंने बहुत ही मंच संचालन बहुत ही सुंदर ढंग से किया। बहुत आपने मंच को 4 चांद लगा दिए। श्रीवाणी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई। चारवी, हमजा, हिताक्षी, नरून, अंशी, आर्यन, आहाना, रिया पटियानी, अनुषा, अनिका, विदुषी नंदन पांडे, श्रीवाणी, प्राची, गौरी, सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। और इसी तरह आप लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और हम सबका भी नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में आए और आपको बहुत बहुत सारा प्यार। और इसके साथ ही हम इसके साथ ही मैं उन अपने जो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो प्रत्येक सप्ताह काम करते हैं और तभी हमारा प्रोग्राम सुचारू रूप से चलता है। ग्लोबल प्रेसिडेंट तुफैल जी का शुक्रिया, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट सतीश जी और अनुपम किंगर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ग्लोबल सोशल मीडिया कपिल बत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रीजनल प्रेसिडेंट विभा जी, मनोरमा जी, एग्जीक्यूटिव काउंसलर शरद जी, अनिरुद्धा जी और खलील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया रिपोर्ट के लिए कपिल बत्रा जी, अनुपम किंगर जी, अनुपम पाठक जी, शेरेबानो जी और किरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ई मैगजीन के लिए चीफ एडिटर विभा जी, हिंदी एडिटर पूर्णिमा जी, आर्ट डिजाइन एडिटर डॉक्टर शालिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात एक अजीम शख्सियत के लिए वाइस प्रेसिडेंट अनुपम किंग, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट अनुपम किंगर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेंटर्स जो का बहुत बहुत धन्यवाद, सतीश जी, कपिल पत्रा जी, ब्रज किशोर जी, राम स्वरूप दीक्षित जी, विनय मोहंता जी, मुस्ताक सदर जी। पोस्टर एंड वीडियो के लिए आमिर तुफैल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्टिफिकेट्स के लिए मनोवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। CTL के स्केच के लिए जोएब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब से जो भी हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोऑपरेट करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बच्चों की मम्मी पापा ने इसके लिए कोऑपरेट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे, मुलाकात एक अजीम शख्सियत में, भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे, जिसमें बहुत ही प्रतिभावान अतिथि होंगी डॉक्टर पूजा गंगानिया जी भारत से, और जिसे होस्ट करेंगी PLG की GVP अनुपम किंगर जी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस प्रोग्राम से जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, सबा खैर, गुड नाइट। जी आंटी, हाँ बेटा पढ़ लो, आप पढ़ लो, क्योंकि आपका छूट गया था ना, तो मैं एक्चुअली वोट ऑफ थैंक्स में स्टार्ट कर दिया था, आपका प्रोग्राम नहीं हो रहा था, तो अब आप पढ़ सकती हो। जी मैम, और सॉरी इतना लेट लगा थी, एक्चुअली मेरा पेज जिसमें मैं लिख रही थी तो वो वहाँ रखा था। No problem.
Go ahead. ओके फिर से स्टार्ट करती हूँ। बैठी हूँ मैं शांति से, पर दुनिया की हर जंग जीत जाऊंगी क्रांति से। आत्मविश्वास से भरी हूँ मैं, तभी दुनिया के आगे डटकर खड़ी हूँ मैं। मानती हूँ शांत लोगों का तो जमाना ही नहीं, पर शांत लोगों का तो जमाना ही नहीं, पर मुश्किल के समय बहाना नहीं। बुरी बातों से फर्क नहीं पड़ता मुझको। हाँ, आज आप सभी के सामने सुनाऊं आप बीती आप सबको। शांति को क्रांति बनाना जानती हूँ। अरे हाँ, मैं खुद को अच्छे से पहचानती हूँ। दुनिया में शांत लोगों की बात नहीं, पर ऐसी बात नहीं किसी की इज्जत करने में कोई बात यही नहीं। मुश्किलों से तो भरी जिंदगी है, पर ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं, दुनिया में सिर्फ मुश्किलों की बंदगी है। थैंक यू। Wow, Ria, that was बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रीवानी, हाँ। फातिमा भी जुड़ गई हैं, उनको भी ले लीजिए। जी I'm जी so glad कि फातिमा जी हमारे साथ जुड़ पाई हैं। I know कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी जुड़ने में। तो I would like to reintroduce Fatima ji, our last young poet for today. वो एक 11 साल की लड़की है जो पुणे में रहती है और वह ना केवल एक अच्छी छात्रा है बल्कि फुटबॉल की भी खिलाड़ी है। उन्होंने स्टेट लेवल पर खेला है और जल्द ही वो नेशनल लेवल पर भी खेलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। लेकिन खेलकूद के अलावा वह रोज कुरान पढ़ती हैं और उनको अपने फ्री टाइम में संगीत सुनना बहुत पसंद है, खासकर अंग्रेजी गाने, लेकिन अरबी जैसी अन्य भाषाओं के गाने सुनना भी उन्हें पसंद है। So please join me in giving a warm welcome to Fatima Hassan as she takes the stage to share her love of poetry. Hi, my name is Fatima Hassan. I'm of age 12, studying at Bishop's Girls School, Undri, Pune, in 7th grade. I'm good at studies and love to play football. I have played at state level and soon will play at national level. I have a keen interest for Arabic studies and doing research. And reading Quran is just like a daily habit now. I do fine art like my dear grandfather, and I'm hoping to be an architect soon. So the poem I'm going to be reciting is I Play Football. I begin. I play football. At height 4 feet 8 I run to kick the ball for fun. Center forward am I on the team to shoot the center forward am I on the team to shoot the ball is my dream. All run with me to pass the ball through. I dribble with reds as we are blue. Some play cricket to become Gavaskar. I kick the ball to become a master. Most popular is FIFA to world. Bishop's my school is like my world. Coaches and teachers help me to play and read. I will be the top scholar and in the lead. Help me friends to reach the goal. In academics to learn and beat them all. I play football. Thank you. Wow, very Right. nice, very nice. And Fatima, you know, Fatima is Zoe Dalal's granddaughter. Okay. Very nice. Beautiful. बहुत अच्छा फातिमा, Thank जैसे you. डाला Very वैसे nice, बोल। Fatima. And as you all know that vote of thanks has already been done. So And one more request, आप सब बच्चों जिन्होंने आज पढ़ा है ना, आपने अपनी रचनाएं मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? ताकि आपकी रचनाएं अगले मैगजीन में अगले सप्ताह अगले शनिवार को प्रकाशित हो पाए।
तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कल परसों तक 2 दिन के अंदर। तो इसके साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। शरद जी, आप कुछ बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, इनसे तो हम लोग को खुद इंस्पिरेशन मिल रहा है कि इतना सुंदर टाइम मैनेजमेंट बताइए। शिवानी एकदम बकायदा समय और वक्त को की नजाकत को समझते हुए मामला को आगे बढ़ाई और कितना सुंदर समय पे सब खत्म हुआ है। एंड वेरी वेल प्रेजेंटेड बाय ऑल द किड्स एंड पूरा एक्सप्रेशन के साथ। टाइम से की। जी, बहुत सुंदर। Thank you very much. Even I would like to say that you anchored beautifully, and the whole you managed the time very well, and I really enjoyed you kept us all in tune. Great job. Yes, Thank yes, you definitely. so much. Thank you so much for listening to me. I was really nervous about this, but I'm so glad. Definitely. So signing off.